No, what's up? You on poverty? One minute. No, Meenakshi Lekhi wants to counter you. 1 minute. No, one second. On poverty, she wants to. Do you have facts to counter him on poverty? 1 minute. Meenakshi Lekhi, do you have facts to counter him on poverty? My point is. No, do either of you have facts to counter him on poverty? I think Mr. Vyas will be able to give you the precise fact, but I'm making one point. No, let one point I'm making is when you're. No, he's throwing a challenge. Can you counter him on figures on poverty? Listen to me. I give them the challenge. That's exactly my point. You allow me to complete. You're not letting me complete. No, you talk about you counter me. He's saying you counter me on poverty. Will you please start listening? Will you only if you permit me to speak? Counter him on poverty. Can I? Counter him on poverty. Yes, I'll counter him on poverty. Mr. Vyas will give you the exact figure, but let me give you a few indicators. When you discuss the indicators 10 years ago, and you allow me to complete, miss. Don't intervene. That means you don't have the courage to listen to me. Ten years ago, what was the HDI? Let us please counter. And 10 years later, what is the HDI? Is it better or it is not better? It has improved. Maybe the manner in which it should have improved. Okay, this is interesting. I just want to lay it for the viewer tonight. 1 minute. 1 minute. I want to lay. There is a direct debate here on the Newshour. Here on the Newshour, the Congress representative has just challenged the BJP, saying your figures on decline in poverty are concocted. Meenakshi Lekhi and Jainara and Vyas has gone up in past 10 years. You prove it to me. Prove it to me. I will not speak unless you are willing to listen to me. Arnav, for 1 minute. Just half minute. I challenge Vyas and Lekhi in Gujarat performance in terms of Human Development Index, poverty alleviation, education, and health. I challenge them and what government concern. One figure. 10 years ago and see the figure now. Narendra Modi says, I have created a new middle class. I want any BJP representative prove it in terms of numbers. Mr. Dr. Vyas, can you prove it in terms of numbers? The HDI. Arnav, has the HDI gone down or it has gone up? The way we are debating and the way the country is watching us, I think we are making a farce of a debate. Neither of us have the courage to listen to the other side view, nor you have the patience to permit the person making the argument to complete his argument. This is not the way the debates go on. Understand one thing, you are talking about creating a new middle class. Now you must be aware that Gujarat, as far as the rate of urbanization is concerned, is one of the fastest growing urbanized state in the country. Obviously, therefore, when you have urbanization, there are people who are drawn from the fringes and the villages who are migrating to urban areas or urban trade areas. Now, there are we are dividing this into two. Number one is urban area and second is those areas which are having urban trades. Now, they are neither rural nor urban. Now, when you are talking about creating a new middle class, it is precisely this we are talking about. It is precisely what I am talking about is a class that has been drawn in the wake of the development to seek employment, to seek economic opportunity, Dr. Vyas, and come and settle in. Dr. Vyas, Dr. Vyas, with all humility, may I please make a point to you that urban India is not middle class India. One line. No, urban India is not middle class India. Don't make that. Don't draw the line. Don't draw the line. Allow me to complete one line. You are not understanding. I have not said urbanization. I am saying the fringe areas which have urban trades which are neither rural nor urban. Not necessarily that I am talking about cities or metropolitan cities like Bombay or Delhi, where there is that definition. I have asked a simple question tonight. Dr. Vyas, I have asked a very simple. I'll ask you a simple answer. I'll give you a simple answer. Yeah. One line. You know, in civil services exam, you're supposed to do a rural posting.
all IAS officers are supposed to do a rural posting. When it comes to the rural posting, they do not give Gujarat because they feel the Gujarat urbanization rate is so high that even villages have those facilities that people will not get the exposure to what rural posting is. What will be the bigger certificate than this? I simply see. I'm not taking. I was throwing a point here tonight. No, one second. Now, to the Congress representative, Jagruti Pandya, I'm just coming to you. 1 minute. To the Congress representatives, I'd like to humbly make a point. Ami Yagnik, I want to know tonight whether you will accept. No. My question is to Ami Yagnik. Ami Yagnik, here's why Narendra Modi potentially is right. Because 2004 to 2010, the figures that I have as far as poverty ratio are concerned, there's a significant drop of 9 percentage points in these years when Modi was in power, compared to 1993 to 2004. In fact, when I look at 2009, 2010, I am told that the poverty ratio in Gujarat is 23%, 7 to 8% below the national average. Is that not proof that Narendra Modi is 100% right when he says, I have created a new middle class? Can you give me any figure better than that? Give me any one figure better than that. Figures which you have quoted. No, these figures which you are saying, they cannot be read into isolation, because we are not taking into consideration the BPL people who have completely risen to 31%, 31 lakh families from 23 lakhs in the last 5 years. We have not taken into consideration all those farmers. We have not even taken into consideration that so the decline in poverty, has been observed across all social groups. All social groups. Yes. But that does not say that there is a rise in some kind of a middle class family, a middle class layer, and so. 1 second, please. You know, I fail to realize why you are not accepting the facts which are at hand. I fail to realize this. No, there is one more reason, Arnab. I'll give you. No, I fail to realize why the Congress party is not acknowledging that Modi may have a strong case when he says, I've brought up a section to the middle class. Should I say something about this particular issue? Middle class is concerned. In Gujarat, there are only 2 classes. Almost about 15% of those who have got the benefit of the so-called development he boasts about, and almost 85% of the chunk does not have the benefits of the. My question now is to Jagruti Pandya. My question. I'm coming. I have an answer to what you are asking. I want to expose the double speak of Congress. Sir, I'll come back to you. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. Give me 2 minutes. I want to ask Jagruti Pandya. Jagruti Pandya ji, 1 minute. My question is to Jagruti Pandya. Jagruti Pandya ji, you are from the Gujarat Parivartan Party. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम एक नया मिडिल क्लास उभर के ला रहे हैं, हम युवकों को अपने साथ ले जा रहे हैं और हम एक नई तरह का विकास ला रहे हैं गुजरात में, आप जब लोगों के बीच में जाते हैं तो वो क्या कहते हैं आपको? उनको जो अभी आपने कहा विकास की परिभाषा क्या होती है? आम आदमी का विकास। आम आदमी के विकास में जो बातें आती है, जहाँ तक अभी तो मैं इस फील्ड में न्यू हूँ, लेकिन मैंने मेरे पति को देखा है और मैंने जो देखा है उसी से मैं परिभाषा समझ रही हूँ कि परिभाषा में इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट, कानून व्यवस्था, सलामती, महिला की सुरक्षा है। और नरेंद्र मोदी जी के लिए उनके ही परिवार की सुरक्षा वो सबसे बड़ी आपके सामने आज मैं खड़ी हूँ। इससे आगे मैं आपको क्या कहूँ कि आपको पता है कि आज अभी नरेंद्र मोदी जी ने मंगलसूत्र सारे गुजरात की महिलाओं को दे रहे हैं, तो मेरा मंगलसूत्र तो उन्हीं के परिवार का मंगलसूत्र, जो मैं उनकी बेटी हूँ, एक माता हूँ बच्चों की, वो छीना गया है। उसको वापस लाने के लिए उन्होंने क्या किया? मीनाक्षी लेखी कुछ कहना चाहती है आपको भारतीय जनता पार्टी से? यस मीनाक्षी, योर पॉइंट टू जागृति पांड्या, देन विल गो बैक टू द डिबेट। गो अहेड। जागृति जी, आपके साथ जो हादसा हुआ उसके लिए सभी आपके साथ सम्मिलित हैं आपके दुख में,
लेकिन अगर आप उसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करती हैं तो उसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि सबसे बेस्ट रन स्टेट जहां पर महिलाएं सबसे अधिक सुरक्षित हैं, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक। और एक आप मेरी बात पूरी करने दीजिए जागृति जी। नहीं, आप पहले मेरी बात प्लीज मेरी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप कहिए। Let her complete. ब्लेम नहीं किया आप। Let Jagriti complete, Meenakshi. I'll come to you. आपको ब्लेम करने का मेरा कोई मकसद नहीं है कि आपने पॉलिटिकल को आपने यूज किया। मैं उसके खिलाफ हूँ, मैंने यूज नहीं किया, नहीं तो मैं 10 साल पहले 2007 में इलेक्शन में आ चुकी होती। जब मैं आपसे माफी चाहती हूँ अगर आपकी भावनाओं को नहीं, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। जागृति जी, जागृति जी, आप मेरी बात अब सुनिए प्लीज। आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए और आपकी जो भी आप व्यक्त करना चाहें, आपने मुझसे ब्लेम लगाया, वो व्यक्त करने के लिए मेरे को बात तो कहने दीजिए बहन जी। अगर आप बात नहीं करने देंगी तो मैं क्या बोलूं? You made your point. मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ब्लेम लगा रही है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। मीनाक्षी जी, ये बात आप नरेंद्र भाई को अगर आपको ऐसा महसूस हुआ, आप गुजरात में आपका महिला नरेंद्र भाई को कहना चाहिए था। गुजरात में नरेंद्र भाई को आपको मेरी बात नहीं जानी थी। क्यों आपने आवाज दबाने की कोशिश हुई? आपने कभी जानने की कोशिश की? आप लोग आंसू लूचने आए थे मीनाक्षी जी, आपके ही लोग आंसू लूचने आए थे। आप जब आपको न्याय की बात में लेके सामने आई बार बार, तो आप लोग कभी आए मेरे पास? जब नहीं आए तब मैं बाहर आई हूँ। इसीलिए जो आपने मुझ पे ब्लेम लगाया है वो बिल्कुल गलत है। अब आप मेरे को मेरी बात कहने दीजिए। अब आप जागृति जी, आपने पहली बार One minute, जागृति जी, जागृति जी, रिपीट करने जागृति जी, one minute, मीनाक्षी लेखी, गलत ही रहेगी। एक महिला होते हुए मीनाक्षी लेखी, आप एक महिला पे ब्लेम लगा रही है। You have every right, मीनाक्षी, but 1 minute. अब आप महिलाओं का गुजरात को सारा इंडिया देख रहा है। ओके, जागृति जी 1 मिनट, जागृति जी 1 मिनट। तो अब आप मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। जागृति जी एंड मीनाक्षी जी 1 मिनट प्लीज। मुझ पे आक्षेप कर रही है तभी मुझे जी, जागृति जी, यू हैव पुट आपके आक्षेप तोहमत की बात सब कुछ सुन ली, तो अब मेरे को मेरी बात पूरी करने देंगे? मीनाक्षी, आई रिक्वेस्ट यू, 500 बार कहे या 50 बार, मैं प्लीज रहेगी। अर्णव जी, आई रिक्वेस्ट यू। अर्णव जी, आई रिक्वेस्ट। आपने कहा महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मैं उस महिलाएं सुरक्षित नहीं, महिला का जब मंगलसूत्र मैं उसकी आपको परिभाषा बताना चाहती हूँ। तब आज मीनाक्षी जी, आप मुझे ये कहते हैं महिला को आक्षेप लगा रहे हैं कि जब मैं कर्ज अदा करने आई हूँ एक मंगलसूत्र का, तब आप मुझे बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिकल क्षेत्र को यूज कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है।